Hello everyone, how are you all? Subscribe my channel Vijaya Manorama Tutorials. So here is a big update from CBSE. So जो भी 10th के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि पूरा सिलेबस पढ़ना है क्या मैडम, कैसे एग्जाम्स होंगे, लाइक लास्ट ईयर विल दे कैंसिल आवर एग्जाम्स. So these all things used to ask, all most of the children were messaging me regarding that. So सीबीएसई ने उसका पूरा क्लैरिटी दे दिया कि किस टाइप के एग्जाम्स होंगे, कैसे एग्जाम्स होंगे, किस व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दैट एग्जाम. yesterday only they have sent the circular which I'm going to show you, and I'm going to give you the clarity regarding that. So here is the circular. It was released. The circular was given on July 5th 2021. So it is to all the CBSE schools it was given. Due to the pandemic situation which was caused almost all the CBSE schools to function in a virtual mode. So all the virtual classes are only going on right from 2020 to till now also. 2020-21 was passed like that only, and now also 21-22 will be almost now the virtual class is only going on. So ये जो clarity दिया गया है CBSE क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है. So this is for class 10th and 12th. So यहाँ पे the board has also considered the concerns regarding differential availability of electronic gadgets, connectivity and effectiveness of online teaching, and other socio-economic issues, especially with respect to students from weaker, economically weaker sections and those residing in far-flung areas of the country. सो उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है, बिकॉज उनको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. हैप्पीली पढ़ाई करते करते अच्छा नॉलेज आप गेन कर सकते हो. सो इन द अबव बैकड्रॉप एंड इन लाइन विद द बोर्ड्स कंटिन्यूड फोकस ऑन असेसिंग स्टिपुलेटेड लर्निंग आउटकम्स बाय मेकिंग द एग्जामिनेशंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड. सो जो भी एनईपी में अनाउंस किया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग होगा. सो लाइक दैट ओनली कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग and core concepts based, student centric, transparent, technology driven, and having advanced provisions of alternatives for different future scenarios. So the following is the scheme for class 10th and 12th. जो scheme है first कैसे होगा देखते हैं एक बार. So academic session will be divided into two terms में होगा. Two term exams, that is only our heading also. So two term exams होंगे विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द सिलेबस. सो पहले क्या हुआ था, 30% का सिलेबस रिड्यूस किया गया था. फ्यू टॉपिक्स में रिड्यूस्ड फ्रॉम द चैप्टर्स. सो नाउ इट इज नॉट लाइक दैट. whole syllabus is there, but two different exams, two different terms which you have to write, so that you are not going to take much burden regarding the exams. Okay, so examinations will be bifurcated syllabus only. So this is done to increase the probability of having a board conducted classes for class 10th and 12th examinations at the end of the academic session. Okay, so the syllabus for the board examination 21-22 will be rationalized. So here similar to the last academic session to be notified in July 2021 में बताया जाएगा. इस मंथ में जुलाई के एंडिंग तक आपको पता चल जाएगा कि और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं. सो हियर एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट. सो ये जो है पूरा इंटरनल जो भी बच्चे अगर वो एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे, तो अगर इफ दे आर नॉट रेडी टू राइट, अगर सिचुएशंस अब तब भी अगर उनके कंट्रोल में नहीं आएंगे, तो इंटरनल असेसमेंट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल्स, project works, these all are going to be taken as consideration. So details of curriculum transaction, if you see class 9th and 10th internal assessment होगा, 3 periodic tests, student enrichment, portfolio, practical work, speaking, listening activities, projects, these all things will be as a internal assessment. So 11th or 12th का भी internal assessment, like include end of the topic of unit test, exploratory activities, practicals, projects, सब कुछ होंगे. So schools would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidences in the digital format. So all the evidences should be stored. Okay. CBSE will facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. So ये भी सारे schools carefully उनको रखने पड़ेंगे.
So board will also provide the additional resources like sample assessment, question banks, teacher trainings, more reliable and valid internal assessment करने के लिए. So term 1 एग्जामिनेशन कैसे होगा? So ये तो बहुत अच्छी खबर है कि 50% अभी ऑलवेज द एग्जाम्स फाइनल एग्जाम्स जो बोलते हैं हम लोग, सो मार्च अप्रैल में स्टार्ट होंगे नहीं. This year the term 1 examination also a part of board examination only, so that will be conducted in between November and December 2021 within a window period of 4 to 8 weeks of for schools situated in different parts of the country and abroad. Okay, questions will be with multiple choice questions, case based multiple choice questions and assertion reason type questions. So duration of the exam will be 90 minutes. 50% एंटायर सिलेबस का 50% जो होगा 90 मिनट्स का आपका एग्जाम होगा. सो क्वेश्चन पेपर्स विल बी सेंट बाय द सीबीएसई बोर्ड्स टू स्कूल्स अलोंग विथ मार्किंग स्कीम. ओके, सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, आप एबीसीडी लगा सकते हैं. ऐसे सोचोगे अगर पूरा कंटेंट आपके दिमाग में नहीं होगा तो यू कांट आंसर इट प्रॉपरली. सो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही सबसे डिफिकल्ट टास्क होते हैं. It may be it is positive on one side and negative on one side. If you score, you can score. If you lose, you will lose. Okay, so be careful. Try to learn the content thoroughly. Question papers will be sent by the CBSE to schools along with the marking schemes. So OMR sheets जो भी बच्चों को इसकी प्रैक्टिस नहीं है, schools उसको प्रैक्टिस देंगे. The responses of the students will be captured on OMR sheets only. Okay, so evaluation and marks obtained will be uploaded by the school on very same day. So एक marks of the term 1 examination will contribute to the final overall score of students. Next आपका second term कैसे exam होगा? Term 2 exam also it is with the 50% entire syllabus only. So examination would be around March and April 2022 at the examination centers fixed by the boards. Okay, the paper will be of 2 hours duration. 2 hours के 90 marks का पेपर आपका होगा and have questions of different formats. यहाँ जो final exam जो होगा मार्च अप्रैल में, वहाँ पे not only MCQs, case study based questions, situation based, short answers, long answers सब कुछ होंगे. 90 minutes का MCQ based questions will be in case of the situation is not conducive. Okay, एक्चुअली मार्च अप्रैल में आपका जो एग्जाम होगा वो शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, ऑब्जेक्टिव सब कुछ इंक्लूडेड होगा. इन केस द सिचुएशंस आर सेम लाइक दिस ओनली विच इज नॉट अंडर कंट्रोल. सो 90 मिनट्स का एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा, will be conducted at the end of term 2 exam. Okay, at the end of term 2 also. So marks of term 2 examination would contribute to the final overall score. Okay, few more different situations में कैसे handle करना है exams, that also given here. You can see in case of the situation of the pandemic improves and students are able to come to schools or centers for taking the exams, it is well and good. Term 1 and term 2 का exam होगा schools और center outer center में भी होगा. The theory marks will be distributed equally between both the exams. Okay. Pandemic forces complete closure of the school during November December में तो term 2 exams are held at schools or centers. Okay. So अगर नवंबर दिसंबर में एग्जाम्स नहीं होंगे तो टर्म 2 का जो एग्जाम्स होगा वो स्कूल में या सेंटर में होगा. So term 1 MCQ based examination would be done by students online or offline from home in this case. So the weightage of this exam for the final score would be reduced. अगर वो लोग घर से लिखेंगे तो ऑनलाइन MCQs अगर होंगे तो उसका वेटेज कम हो जाएगा. वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जाम्स विल बी इंक्रीज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स. तो टर्म 1 का जो वेटेज होगा वो कम हो जाएगा, टर्म 2 का बढ़ा दिया जाएगा. So in case of situation of the pandemic forces complete closure of the schools during March April 2022, but term 1 exams are held at schools or centers. Okay, then internal assessment based on the term 1 MCQ based exam and internal assessments. So based on that only results will be announced. So weightage of marks of term 1 examination conducted by the board will be increased to provide year end results of the
candid. In case the situation of the pandemic forces complete closure of the schools and board conducted term 1 and 2 exams are taken by the candidates from home only, then the internal assessment. So result would be computed on the basis of the internal assessment, practicals, project work, theory marks of term 1 and term 2 exams taken by the candidate from home. Okay. In class 10th and 12th के लिए है subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the examination. तो पूरे सारे कंडीशन सोच के ये जो सर्कुलर दिया गया है, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट. सो आप लोग दिल लगा के पढ़ो, मन से पढ़ो अच्छी तरह से. In all the above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of internal assessments and home-based exams. So इसी के बारे में I have made a small like this. You can just go through. सर्कुलर भी देख सकते हो और दिस ऑल्सो. तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF भी आपको मिल जाएगा. तो डू अटेंड माय क्लासेस. क्लास 10th के जो भी बच्चे सब्सक्राइब करो चैनल को. पूरा साइंस आई एम गोइंग टू इन डिटेल बिकॉज MCQs आर देयर. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट मोर एंड मोर MCQs. तो कंटेंट अगर आपको अच्छी तरह से आ जाएगा तो MCQs आर वेरी इजी. तो जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल विजया मनोरमा ट्यूटोरियल्स. अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को. जितना ज़्यादा हो सके लाइक करो, शेयर करो. एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक है, जस्ट ज्वाइन करो. ओके, हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस. ओके, थैंक यू वन एंड ऑल. So don't forget to subscribe. Stay safe, stay healthy, be strong and be confident. Thank you. Bye bye. All the best.